फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस करंट अफेयर डिकोडेड मॉड्यूल ऑन ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दोस्तों, आपको जैसे पता है दैट G20 के प्रेसिडेंट इंडिया है और इंडिया में अभी बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है. दैट्स अ फाइनल यू कैन से इवेंट विच इज हैपनिंग. और उस इवेंट के तहत, ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला विच इज कॉल्ड GSDR, ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल. कौन ऑर्गेनाइज करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक एंड G20 के प्रेसिडेंसी. ठीक है, सो इन दिस केस दिस आर 3 members which are going to organize on this. ठीक है, so this is about fact. Let's talk about what is the meaning of, you can say, this global sovereign debt and what is this major issue. So I'm sure you understand that in the last few years global debt has risen. ठीक है, अनाप शनाप लेवल पे बढ़ गया. इनफैक्ट जो ग्लोबल सोवरेन डेट है वो बहुत अलग लेवल पे बढ़ गया. ठीक है, सो यू मे वंडर सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन डेट. सोवरेन डेट का मतलब होता है द लोन टेकन बाय द सोवरेन गवर्नमेंट. दैट मीन्स एनी गवर्नमेंट विच इज पावरफुल, विच इज सोवरेन, लाइक इंडिया, UK, USA, they are sovereign countries, sovereign nation, sovereign state. When they take loan, ठीक है, then it is known as sovereign debt. So you may wonder, sir, किस तरीके से गवर्नमेंट लोन लेती है? गवर्नमेंट 2 तरीके से लोन लेती है, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली. व्हाट यू मीन बाय इंटरनली? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स लोन इंटरनली. ठीक है, दैट इज थ्रू ट्रेजरी बिल्स, bonds. ठीक है, that's how they generally take. Or possibly people like you and me, when we put money in, you can say, saving schemes or provident fund, these are basically loan taken by the government. So government in turn provides us interest. Yes or no? That's an internal matter. ठीक है, externally we take loan from IMF, World Bank, from various other countries like UK, USA, and so on and so forth. So we all know that we can take loan from World Bank for developmental projects. So देश में कोई भी बड़े developmental project करने हो, roads बनाने, bridges बनाने, institutes बनाने, IITs, NITs, NLUs, then we can take loan from World Bank. While when the country is in financial liquidity crisis, then we can take loan from IMF, which is called International Monetary Fund. So with this, I'm sure you know who is the head of IMF, who is the head of World Bank, and where are their headquarters. So if you know it, please put that into comment box. Okay, let's come back to our problem which we are discussing about, which is called Global Sovereign Debt Roundtable. बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत अच्छे तरीके के पॉइंट है इसके अंदर. आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोस पॉइंट्स connected to this issue from exam point of view. For example, what are the reasons why this global sovereign debt is rising and it is creating trouble to the entire world? One of the big reason was COVID-19. पैंडेमिक में जब दुनिया पूरी बंद हो गई, रेवेन्यू आना कम हो गया, ठीक है, और सामने यू कैन से कहीं ना कहीं खर्चे तो बढ़ ही गए थे. हेल्थ के ऊपर खर्चा करना था, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे खर्चा करना था. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेस्ड लॉट ऑफ ट्रबल. सो thereby you can say they wanted lot of loan. Another point, these countries, when they went out in the market to take loan, they had to take high interest loans because their credit worthiness was not great. ठीक है, when the businesses were as usual, पंगा नहीं था. जब बिजनेसेस एज यूजुअल नहीं होते तो उनको जब लोन लेना पड़ा, दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल. ठीक है, सिमिलरली you can say after COVID-19, when the scenario started to grow in a proper way, the money started to move from, you can say, various parts. So that's called capital flight took place because developed nations put their policies in such a way that their interest rates were going up. So ये capital flight होने लगा. ठीक है, अलग अलग देशों में जो पैसा पड़ा हुआ था वो सीधा पहुंचकर यू कैन से बड़े बड़े डेवलप देशों में पहुंच गया. एंड देन जो ऑब्वियस रीजन हर कंट्री के साथ होता है व्हेन दे आर गोइंग फॉर यू कैन से हायर सोवरेन डेट इज वीक गवर्नेंस एंड लॉट ऑफ करप्शन. ठीक है, सो दिस आर द मेजर रीजंस व्हाई यू कैन से दिस काइंड ऑफ
problems were taking place. One big reason, you can say, in addition to all this, was China's BRI initiative, that is Belt and Road Initiative. What happened with Belt and Road Initiative? They wanted to develop those Belt and Road, so those old Silk route and the maritime route they wanted to develop. Now, when they were developing those routes, they were developing routes in other countries. So, in those countries, उन कंट्रीज को जनरली यू कैन सी इन्होंने लोन दी. दे डिड नॉट प्रोवाइड सस्टेनेबल लोन्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल लोन्स? सस्टेनेबल लोन ऐसी होती है कि भाई आपने लोन दी और सामने वाला कंट्री उसको समय पे भरपाई कर सके, उस तरीके के आपने इंटरेस्ट रेट लगाए. इन्होंने ऐसा नहीं किया. एक एग्जांपल है आपके सामने, श्रीलंका के अंदर जब इन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट बना के दिया, सो दैट पोर्ट के साथ जो अर्निंग होनी चाहिए, श्रीलंका को सही तरीके से अर्निंग हुई नहीं और श्रीलंका को फाइनली वो पोर्ट चाइना को 99 ईयर लीज पे दे देना पड़ा. सो दैट्स अनदर फैक्टर विच क्रिएटेड दिस ग्लोबल सोवरेन डेट प्रॉब्लम. सो व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय वेरियस बॉडीज? ठीक है, क्या क्या लिया? वन, G20 ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यू कैन से इनिशिएटिव किया था जिसका नाम था डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव. डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव DSSI. ठीक है, जिसके तहत जो जो भी कंट्रीज इसके अंदर मेंबर बनेगी 2020 पैंडेमिक के बाद, क्योंकि लोन देने के काबिल नहीं थे, 73 कंट्रीज को उन्होंने इंक्लूड किया. दिस कंट्रीज डिड नॉट पे इंटरेस्ट, they did not repay their loan. ठीक है, so that is a kind of moratorium period provided. Then G20 also provided common framework for debt treatment. ठीक है, कि जो डेट ट्रीटमेंट है, डेट जो ज्यादा बढ़ गया उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उन्होंने कॉमन फ्रेमवर्क बनाया. 3 कंट्रीज, चैड, इथियोपिया एंड जाम्बिया वर इंक्लूडेड इन दिस फॉर डेट ट्रीटमेंट. हाउएवर उसके ऊपर कोई बड़ा काम हो नहीं पाया. We'll have to wait and watch whether in this meeting, in this roundtable, will they be in a position to bring this, you can say, important point. ठीक है, and उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए that there is one body called Paris Club. This Paris Club was in the news when we were discussing about Sri Lankan matter. Yes or no? You remember Sri Lanka was in a deep economic crisis. ठीक है, जो प्रीवियस गोताबाया राजपक्षा गवर्नमेंट थी वो मैनेज नहीं कर पाई. ठीक है, सो देयर वाज अ ह्यूज ट्रबल इन श्रीलंका. श्रीलंकन पीपल अटैक्ड ऑन राष्ट्रपति भवन. ठीक है, और वहां से उन्होंने मतलब अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाया था. सो दैट वे इट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल एंड नाउ दे वांटेड लोन्स. ठीक है, दे वांटेड लोन फ्रॉम IMF. सो देयर इज वन बॉडी which is lenders body which is known as Paris Club. 1956 में पेरिस में बनाया गया था पेरिस क्लब. उसके 22 कंट्रीज उसके मेंबर है. ठीक है, दे प्रोवाइड सॉल्यूशन टू पेमेंट डिफिकल्टीज. सो श्रीलंका के केस में इस पेरिस क्लब के बारे में बात हुई थी. ये पेरिस क्लब, सिमिलरली दिस यू कैन से ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल kind of activities are needed for restructuring this sovereign debt in the world. I hope in this module I could help you with clear understanding of what is sovereign debt, किस तरीके से कंट्री कौन कौन सी डेट लेती है, ये मैंने आपको बताया. और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि what is exactly the issue happening with this roundtable conference. I hope it is very clear. Great. Thank you very much for watching this. Don't miss out to like this video, subscribe our channel, tell to large number of people to be part of ProTalent. Till then, keep learning.